Hello viewers, welcome to my YouTube channel Learning and Sharing. In today's video lecture, I am going to discuss with you the irrigation system of Pakistan. Now we all are well aware that Pakistan is an agriculture state. Pakistan's economic well-being, economic growth is being connected with the performance of agriculture sector. And our agriculture is being dependent on the regular supply of water. So in this video lecture we are going to discuss the irrigation. We will see that what sort of irrigation system Pakistan has, what is the historical background of Pakistan's irrigation system, what are the main components or characteristic or main institute of Pakistan's irrigations, how irrigated water being distributed, and what are the agencies and institutes which control the irrigation system of Pakistan. But before going into detail the irrigation system of Pakistan, let's have a quick glimpse on the introduction, a brief introduction and historical background of irrigation system in the world. Now if you look at the history of irrigation, irrigation is the manual or artificial way of watering to the targeted areas, particularly the agriculture fields. तो irrigation उसको कहते हैं जो हथरादू हो, जो manual हो, which we made by our own efforts, be constructed by its own, where the human efforts being involved. So it ensures the supply of water to the targeted areas, particularly the agriculture fields. तो उसको हम irrigation कहते हैं, यानी कि वो पानी जो ज़राई ज़मीन को दिया जाए, जिसके ज़रिए हम ज़राअत करें, उसको हम irrigated water कहते हैं. If we look at the history of irrigation, the experts, particularly the geologists and archaeologists, they are agreed that the irrigation what we have today, or you can say a canal irrigation, it started in the Mesopotamian region in the world. So first time जो Mesopotamian region है वहाँ पे irrigation start हुई. Now what was the need of irrigation? Agriculture is a long history and it has hand history with the evolution of man. तो जहाँ पे where there was in scarcity, or you can say there was a no rainfall, जहाँ पे बरसात की कमी हुई, वहाँ पे they felt that we need to have some sort of system where we can give water to the particular area. So वहाँ से फिर irrigation का concept आया. When we talk about the history of irrigation in subcontinent, it is also a very interesting history, and we are all know that this particular region, Indian subcontinent, is being known in the world because of its fertile soil, because of its greenery, particularly agriculture. उस हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है. तो यहाँ पे जो irrigation है, जहाँ पे जो agriculture देख रहे हैं, it is because of the irrigation. So irrigation की वजह से है यहाँ पे. So it has been said that the first canal being constructed at the time of Muslim rulers. सबसे पहले जो canal यहाँ पे construct हुआ, irrigated canal, वो Muslim rule हुआ. It was back to the 6th or 7th century. It has also been said that the first perennial canals, if you remember, there are different types of canals. We have a perennial canals, we have inundated canals, and we have a seasonal canals. So the irrigation start with the inundated canals in the Mesopotamia. So inundated canals क्या है कि those canals which are being filled when there is an overflow of the rivers. तो जब rivers overflow हो जाते थे तो वो जो canals है वो fill हो जाते थे, तो उसके थ्रू. तो यहाँ पे अगर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे जो पहला
पहला जो पेरिनियल कैनाल था, now the perennial canals are those canal which give you a continuous regular supply of water, जो रेगुलर हो, जो इट इज इन ऑल सीजन, हर सीजन में आपको पानी. और दूसरा सीजनल कैनाल्स है जो when you have a lots of water so you can fill those canals, तब वो आपको पानी दे. तो यहाँ पे so the first perennial canals were constructed in 7th century, 7th century ago, at the time of Mughal Empire. So Mughal Emperor Jahangir, he constructed the canals to supply the water to its garden, which was being established or being grown in the Shekhupura. So he took the canals from the Ravi River, right bank of the Ravi River. So वहाँ से उन्होंने, तो उसके बाद there are other the imperial like the Tughlaq, he also took some efforts to have a more canals. मगर सबसे पहले जो पेरिनियल कैनाल था वो जहांगीर के टाइम में कंस्ट्रक्ट हुआ, जो उन्होंने जो शेखुपुरा में उसका जो बाग था उसको पानी देने की कोशिश की. Now again in terms of historical development, the period of British periods, it's more key here, more important here, where this system got lots of improvements. So the British rule, they worked a lot to redesign, to remodel, or to make it more viable here to this particular system here. तो सबसे ज़्यादा जो काम किया वो अंग्रेज़ के टाइम में हुआ. उन्होंने इस पूरे सिस्टम को रीडिज़ाइन किया, रीमॉडल किया. दे पॉइंट आउट which are the main local points or important points where we can supply water. They also pointed out the agricultural zones of Pakistan. So for them it was very important to supply to water to those agricultural zones so they can have a more agriculture production. So सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया, प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने लॉन्च किया. Now we are coming to the irrigation of Pakistan. Now Pakistan's irrigation system is the oldest, largest and most contiguous irrigation system in the world. Officially it has been called Indus Basin Irrigation System, IBIS उसको कहा जाता है. Why we call that the oldest and largest and contiguous? Because if you look at the structure or the network of irrigation of Pakistan, which is being based on the larger water reservoir, a major water reservoir like we have a Chashma, we have a Mangla Dam, Tarbela Dam. So these are the major reservoirs. Then we have a 19 barrages, and we have also 14 to 17 interlinked canals, also smaller canals, 140,000 watercourses. So this system is based on many components, many different components. So it has a water reservoir in the form of dams. It has also the barrages where you can control the water, and the dams where you store the water. And through barrages you supply the water to the targeted areas. And you have also smaller canals, intercanals, link canals, and you have also watercourses. So if you look at the whole process, it is so big, so gigantic. That's why it is called the most contiguous. Because if we look at the rivers also, if we take example of river Indus, which is the mainstay here, which is the key character here, Indus River, which if you look at this river, it starts its journey from the Mansoura Lake, from Tibetan Plateau, and it enters in Pakistan from the Kashmir side, first in the north, and then start and travel through the Pakistan and reach to the Arabian Sea. So if you calculate the length of Indus River only, it is 2,900 kilometers, the length of Indus River from the its original point to the where it meet the saltish water of Arabian Sea. तो यहाँ तक अगर और भी मिलाएं तो कह रहे हैं कि ये तकरीबन 3,000
100 3100 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ हो जाती है तिब्बतियन प्लेटो से. So again I tell you, if you look at the rivers, because I told you this system is also based on river. So based on the rivers, streams and tributaries also. So that's why we call it so gigantic, big and largest in the old days. So Pakistan's irrigation system have many rivers. One of them is Indus, we already talked about. Then we have also the eastern tributaries, which is also being called the Panjnad, or the 5 rivers: Bias, Satluj, Ravi, Jehlum. And we have also the western tributaries. They also what supply to the irrigation of Pakistan, like Kunar River, like Kabul River. Say also the western tributaries of Pakistan. Now irrigation water or irrigation system get water from different sources. If you talk about the sources, so we have the natural water resources and artificial. So here we are more concerned about the natural water resources. Which are the natural water sources? So in which we have glacier melt. Number one is a glacier melt. We have, and another we have a rainfall. Then we have underground water. So glacier melt, rainfall and underground water. So from these sources our irrigation gets the water. So now our irrigations mainly get water from the glacier melt. जब हमारे जो पाकिस्तान में जो northern areas है, high elevated areas of Pakistan, which is being called the catchment area of Pakistan. This is a catchment area of Pakistan where you may find the the high peaks here. Most of the peaks of the world are being found here, and those peaks are covered with the snow. So once this snow start to melt, it gives water to the rivers of Pakistan, and then it gives the shape to the irrigation system of Pakistan. So the main chunk of water comes from the glacier melt. Number second is the rainfall. So we have two types of rainfall. One is the summer monsoon rainfall, another the western depression. So again 65 to 70% water, so rainfall water comes from the summer monsoon. But if you calculate the whole whole rainwater, the another one is the western depression, which comes from the Mediterranean Sea, from the west of Pakistan, from the Iranian side, and enters in Balochistan. So from the east and the west, they're both rainfall source of Pakistan. So Pakistan, if you talk about the rain-fed areas, we don't have a larger rain-fed areas in Pakistan where we can say we directly carry our agriculture activity. So Pakistan में जो agriculture है वो इतना नहीं है being carried through the rainfall जितना हम जो है ना irrigation के through करते हैं. So there are smaller patches or the eastern side of Pakistan where we have a dry areas where we don't have an irrigation system, and those areas like the desert area of Pakistan, they are being directly dependent on the rainfall. And we have also Balochistan plateau and some areas in the north where we have a mountain. So these areas being have an agriculture, but they're not a big agriculture there. So there are the small patches of agriculture. You're being carried through the rainfall water, but the most of agriculture has been turned through the irrigation. Now I'm giving you the calculation. Pakistan's total area is 88 million hectares. So out of 88 million hectares, 22 million hectares is under the agriculture. What? 22 million is under the agriculture. Out of 22 means 19 million hectare agriculture has been done through the irrigation. So the main major chunk of agriculture has been done through the irrigation. यानी कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर होता है वो इरिगेशन पानी के थ्रू होता है. तकरीबन you can say from 90 to 95% agriculture of Pakistan has been done through the
irrigated water. So now here, irrigated water is more important in Pakistan. If you remember at the beginning of my video lecture, I told you that the agriculture key for the economic well-being of Pakistan. But I take it differently. I say water is key for Pakistan, because if you look at the agriculture, even the power generation, the irrigated water is being used here. So Pakistan has a water economy, because our agriculture has been dependent on the irrigation. So if you look at this here, so irrigation is more important here. So Pakistan's irrigation been facing lots of issues. So there are two type of problems being faced by Pakistan's irrigations. Now, one are those problems which are being generated by this system by its own. यानी कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो इस सिस्टम ने खुद क्रिएट किए हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं which is being created or which is being creating problem for this problem also. तो मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा. तो मैंने क्या आपको बताया कि 3 कंपोनेंट्स हैं इरिगेशन के, यानी कि 3 सोर्सेस हैं. वैसे वो डिपेंड तो करता है, वी हैव वाटर रिजर्वर, रिवर्स, कैनाल्स, डैम्स, barrages. So these all make the irrigated system of Pakistan. मगर सोर्सेस जो हैं, एक है रेनफॉल, एक है आपका ग्लेशियर मेल्ट, और तीसरा है अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो अंडरग्राउंड वाटर है, बिकॉज इफ़ यू लुक एट द पाकिस्तान, इफ़ यू कम फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड द साउथ, इट हैज़ अ जेंटल स्लोप. तो पाकिस्तान की जो स्लोप है वो कम होता जाएगा, यानी वो नीचे होता जाएगा. तो इसी तरह पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम है. पाकिस्तान की जो कैचमेंट एरिया है वो नॉर्थ में है, ठीक है. तो नॉर्थ से शुरू होती है, वो मेन सोर्स है पानी का, जहाँ से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, फिर वहाँ से रिवर्स स्टार्ट होते हैं, फिर हमने मुख्तलिफ लोकेशंस पे डैम्स बनाए हुए हैं, फिर इस डैम के साथ बैरेजेस बनी हुई हैं, तो ताकि जो डैम्स हैं उनमें पानी स्टोर किया जाए और जो बैरेजेस हैं उसके थ्रू पानी को सही तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. और उसके बाद कनेक्टेड कैनाल्स हैं, फिर लिंक कैनाल्स हैं, फिर वाटर कोर्सेस है. ये तो पूरा स्ट्रक्चर है ताकि पानी पहुंचा जा सके यहाँ पे. तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पाकिस्तान में भी उसका इस्तेमाल इतना नहीं है, व्हाट द पोटेंशियल वी हैव. एक तो it has not been feasible for us because it's been need some money here, need some finance to pump that water. और उसको, if you remember that in Pakistan 70s and early 80s there was a project SCOP being started by the so वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि they start to use the underground water for the agriculture and lowering down the water logging and salinity. तो वो यानी कि वो जो अंडरग्राउंड जो वहाँ पे उन्होंने ट्यूबवेल्स इंस्टॉल किए, एंड देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन इन द डिफरेंट पार्ट्स of the Pakistan, mostly in Punjab and the Sindh, because Punjab and Sindh is the main main zone of agriculture production here. So if you look at the the map of Pakistan, the Indus plains, the Indus plains are the main source, main zone of crop or food production of Pakistan, because this zone is being produced by Indus water, by the Indus, the siltation being thrown by the Indus water tributaries, create this fertile zone. तो यहाँ पे, so if you look at the both side, east and western side of Indus River, ये जो zone है ये fertile zone है पाकिस्तान का, और यहाँ पे ज़्यादा agriculture होता है. तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी ज़्यादातर जो पंजाब का पानी है, इट इज़ फीजिबल और बीन यूजेबल फॉर द एग्रीकल्चर, क्योंकि उसमें इतनी वो सॉल्टिश नहीं है, सैलिनिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द सिंध. तो सिंध का जो अंडरग्राउंड या जो अंदर नीचे का पानी है वो
वो खारा है, वो ख़राब है, यू कान यूज़ फॉर द एग्रीकल्चर एंड आल्सो इन ड्रिंकिंग वाटर। सो इसमें भी थोड़ा सा एडवांटेज पंजाब को है, पंजाब सूबे के, तो वहाँ पे जो पानी है वो मीठा है। अच्छा, उसका एक जोग्राफिकल रीज़न है, क्योंकि पंजाब ऊपर है और सिंध नीचे, वो भी हो सकता है, क्योंकि एक ड्रेनेज भी प्रॉब्लम होती है। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह वो जो ड्रेनेज इशू है वो किस तरह, हाउ इट्स बीन क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द अंडरग्राउंड वाटर। तो ये भी है। अगर इन दोनों क्या कहते हैं, इन दोनों सूबों का मुवाजना करें तो पंजाब में यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है तो ऑलमोस्ट 77% एग्रीकल्चर इज बीन कैरिड थ्रू द इरीगेटेड वाटर। 77% यहाँ पे जो काश्तकारी होती है वो इरीगेटेड वाटर से होती है। उसके बाद सिंध, फिर उसके बाद KPK और फिर बलूचिस्तान, वहाँ पे बहुत ही कम होता है। तो मेजर चंक ऑफ इरीगेटेड वाटर इज बीन यूज्ड बाय द पंजाब, क्योंकि पंजाब बड़ा सूबा भी है एराजी के हवाले से। और व्हेन इट्स कम टू द रिवर्स, जैसे मैंने इंडस रिवर का बताया कि अगर पाकिस्तान में रिवर्स, जो मेजर रिवर्स या ट्राइबूटरीज की बात करें, जो इंडस रिवर है वो सबसे बड़ा रिवर है यहाँ पे। सो ओनली इंडस रिवर सप्लाइंग 49%, व्हाट 49% इरीगेटेड वाटर फॉर द एग्रीकल्चर। सो इसे अंदाज़ा लगा कि जो इंडस रिवर है वो कितना अहम है। नाउ वी आर कमिंग टू द प्रॉब्लम्स, कि कौन से प्रॉब्लम हैं जो विच इज़ बीन फेस्ड बाय अवर इरीगेशन। अच्छा, शुरू में हमने कहा कि हमारा जो इरीगेशन सिस्टम है इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंटेजियस, क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है और साइज़ की वजह से वो उसकी जो साइज़ है वो उसके लिए बड़ा मसला है। क्योंकि इफ़ यू लुक एट इन टुडेज़ वर्ल्ड, जब हम बात करते हैं यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द वाटर शॉर्टेज और और वाटर स्टोरेज, उसकी बात हुई। क्योंकि आप देखें दुनिया में अभी वी हैव अ लॉट्स ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू द वाटर, तो पानी के हवाले बड़े मसाले, एंड क्लाइमेट चेंज इज़ क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हियर। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में बड़े मसाले, और पानी आपको पता है बहुत ही अहम है, तो उसकी वजह से भी इश्यूज हो रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज different methods are being adopted by the different countries to to decrease or to lessen the water storage and also to face the water shortage problems. तो दुनिया में मुख्तलिफ methods अपनाए जाते हैं। जैसे अगर हम when we talk about the irrigation methods, so we have a canal irrigation system, we have a sprinkle irrigation system, we have a drip irrigation system. दो पीछे के जो irrigation system है, they are being called as a smart irrigation system, where you can not only stop the wastage of water, but at the same time you can save the water. तो उस वजह से, मगर दुनिया में जो पॉपुलर इरीगेशन सिस्टम है वो कैनाल इरीगेशन सिस्टम है। अभी तो पाकिस्तान में जो इरीगेशन सिस्टम की जो शक्ल है, जो शेप है, इट इज़ बीन बेस्ड ऑन द कैनाल्स। तो हमें सबसे ज़्यादा कैनाल इरीगेशन सिस्टम है। तो when I was talking about the problems of irrigation here, तो ये जो पाकिस्तान का इरीगेशन सिस्टम ये खुद बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो उसकी जो एज है, फिर उसकी जो साइज़ है, दोनों बड़े मैटर्स करते हैं यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ बिग साइज है, लॉट्स ऑफ वाटर इज बीन वेस्टेड, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाए। इट विल बी सेड द 40% ऑफ कैनाल वाटर इज बीन वेस्टेड बिकॉज ऑफ पर्कुलेशन और सीपेज, और तो इस वजह से बड़ा पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें, सिर्फ जैसे मैंने आपको सिर्फ इंडस रिवर का मिसाल दिया, कहाँ से वो कहाँ तक चलता है, तो इसी तरह बहुत सारे हमारे कैनाल्स हैं, छोटे कैनाल्स हैं, वाटर कोर्सेस हैं, तो दे आर बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर बीन pointed out, are being directed to different regions. So when they are being traveling through, they have a bigger distances. तो जहाँ because we need to supply those water different places, तो उस वजह से पानी हमारा ज़ाया हो जाता है। तो अगर इसकी साइज़ कम होती तो इतना पानी हमारे यहाँ ज़ाया नहीं होता। तो वन रीज़न इज़ द वेस्टेज ऑफ वाटर। दूसरा ये है कि बिकॉज द कैनाल इरीगेशन सिस्टम इट सप्लाई रेगुलर वाटर and all the time here. So because of regular supply of water to the fields,
it raised the water table of those fields. So because of the high water table, the problem of waterlogging and salinity is being, तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग सैलिनिटी के इश्यूज भी होते हैं यहाँ पे. तो अगर पाकिस्तान को आप देखें, इफ़ यू लुक एट दी हिस्टोरिकल progress of agriculture production, you can say that the agriculture production being reduced here. So the problems or the factors can be different, but one of them is this irrigation system. क्योंकि आप जब कंटिन्यू पानी सप्लाई करते हैं ज़मीन को, तो वो क्या होता है, पानी कहाँ जाता है, वो तो नीचे चला जाता है. तो उसके मतलब क्या है कि वाटर टेबल आपकी ऊपर आ जाती है. तो व्हेन इट्स बीन मिक्स, तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. सो दिस क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन. व्हाट? सॉइल डिग्रेडेशन. सो बिकॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन वी हैव लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. वैसे भी पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है. अगर हम वी यूज़ द वाटर, इरिगेटेड वाटर इन अ बेटर वे, और फिर वो वहाँ पे पानी दे जहाँ पे हमें ज़रूरत है, तो एक तो पानी भी बच जाए, फिर हमें वो जो वाटर लैगिंग और सैलिनिटी का इशू भी है. तो मैंने क्या कहा कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ दिस के पानी वेस्ट होता है. दूसरा वाटर लॉगिंग सैलिनिटी के इशू होते हैं, वाटर टेबल ऊपर आ जाती है, और लो प्रोडक्शन होती है, और सॉइल डिग्रेडेशन होता है. ये वो प्रॉब्लम जो इसके साथ प्रॉब्लम है, यानी कि द प्रॉब्लम विच इज़ बीन फेस्ड बाय इरिगेशन. देयर कैन बी अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. So most of them are managerial problems. So we can't manage properly our irrigation system, which is being seriously needed here, कि उसको ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो irrigation है is key है, बहुत important है यहाँ पे. If you look at the management and caring of the irrigation system, there are different institutes. Those institute on the provincial level and also federal level and the provincial level. तो दोनों सतह पे होता है यहाँ पे. There are two prominent institute here which control and manage the irrigation system of Pakistan. One is the WAPDA. Number one is the WAPDA, Water and Power Development Authority, and second is the IRSA. Now WAPDA was established in 1958. WAPDA has more powers and more rights and more control over irrigation. So the projects are being launched by the WAPDA.